Agriculture and its diverse sectors, which includes horticulture, are the largest source of income and sustenance in India. Its importance can be gauged from the fact that 70% of India's rural households still depend primarily on agriculture for their livelihood. Of these, 82% are small and marginal farmers. But the contribution of Indian farmers to India's growth story is a matter of pride for all of us. From a net importer of grain in the first 2 decades after India's independence, India has become the largest producer of grain in the world, contributing some 25% of global production according to the Food and Agricultural Organization (FAO). We are also now the second largest producer of fruit at 10.9%, as well as vegetables at 8.6% of the world's total production. And while these are major achievements, the need of the hour is to rapidly improve the economic condition of smaller and marginal farmers. For this to happen, it's important to diversify agricultural practices, and for this reason, the Government of India has been focusing on the horticulture sector, which includes vegetables, fruits, ornamental, medicinal and aromatic crops. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare launched the Mission for Integrated Development of Horticulture in 2014-15 to provide holistic support to farmers for growing these crops. But there are major challenges. So for this mission to succeed, it's imperative for farmers to adopt innovative and new scientific techniques like drip irrigation, integrated nutrient and pest management solutions, among a host of others. And to see how this can be achieved, our India Science team traveled to Karnal in Haryana to a horticulture center of excellence that is transforming the condition of farmers. फार्मर को जैसे हम अच्छी गुणवत्ता की We are providing good quality seedlings to the farmers and the technologies of protected cultivation, open cultivation, organic farming and micro irrigation, so that these technology can help the farmer in getting higher yield and better quality produce, which in turn will get them better price for their crop and make them self-reliant. किसान की आमदनी बढ़ेगी तो आत्मनिर्भर होगा. The Indo-Israeli Agriculture Project, whose implementing partners are National Horticulture Mission under Agriculture Ministry and Mashav, Israel's Agency for International Development Cooperation. This and much more on this exclusive episode of Science for a Self-Reliant India, only on India Science. The farmer
The scientists also help train the farmers, adopt all the technologies and advanced methods in the most beneficial manner with the aim to boost the yield of vegetables, which in turn can increase farmers' income. The objective of these centers is to help farmers get a deeper understanding on how to adopt and manage new cultivation practices like polyhouse cultivation and micro irrigation, and to grow off-season vegetables which fetch much higher prices in the market. The centers also aim to ensure that the quality of vegetables produced and the nutritional value also increases. The project at Garonda has 4 high-tech polyhouses, 2 naturally ventilated polyhouses, 10 walk-in tunnels, along with other provisions for horticulture and floriculture. All of these provide different levels of protected cultivation. A polyhouse is a structure where a specialized polythene sheet is used as a covering material under which the crops can be grown in partially or fully controlled climatic conditions. Modern-day polyhouses are built on steel frames and are covered with plastic. A high-quality white plastic film of 200 microns thickness is used for covering the steel frame, which can withstand degradation due to UV rays and last up to 3 years. Polyhouse is a smaller version of a greenhouse where polyethylene is used as the cover instead of glass, whose interiors become warm when exposed to sunbeams as the house stops the greenhouse gases from leaving. So when it is cold outside, the temperature inside is survival friendly and warm for the plants. And as the plants are grown under controlled temperature, there is a less chance of crop loss or damage. This helps create a microclimate surrounding the crops that help in maximum growth and enhances the production and quality of the crops. The polyhouse also provides higher concentrations of carbon dioxide to increase the production of crops to the maximum level. Therefore, the yields are higher than in open cultivation. Importantly, crops can be grown throughout the year, unlike in open fields. In addition to this, plants that are otherwise impossible to cultivate in a particular climatic zone can be grown in polyhouse conditions. A good example is the growing of strawberries in the plains of India. हम लोगों ने लास्ट ईयर सेम वैरायटी ग्रो करी थी, उसको हम लोगों ने प्रोटेक्टेड में भी लगाया था, हमने ओपन में भी लगाया था. ओपन में उसकी हाइट मान के चलिए. Last year we have planted the same variety in our protected environment structure and also in our open organic farms. In open conditions, the height of the plant goes up to 8 to 9 feet and not beyond that. And the same tomato variety, when cultivated in protected environment in a polyhouse, its height goes up to 35 feet and the plant keep growing for 9 months with continuous production of flowers and fruits. Because in the protected structure, we can control and maintain the temperature inside the polyhouse. For example, in the case of tomatoes, 24 degrees is considered ideal temperature for its color to change. So we can provide that temperature to the plant even in the winters as well. आप देख सकते हैं कि मार्केट में टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा हो गए, 100 रुपए किलो के आसपास चल रहा है. तो उस वक्त इस कंडीशन में हम उस पे अच्छे प्राइस मार्केट में ले सकते हैं. Polyhouse crops can be irrigated from overhead spray systems which provide water without wastage. In this system, pipes are hung from the plants and the nozzles are fitted in the pipes at a 360-degree pattern. The high-tech polyhouses at the center of excellence are used to cultivate disease-free, high-yielding seedlings for the farmers on order. High-tech polyhouses like a polyhouse are covered with specialized plastic covers, but they have a number of important additions. For example, on one side of the structure, cooling pads are installed and exhaust fans placed on the opposite side to keep the climate inside the polyhouse in check. For irrigation and fertilization, overhead sprinklers are installed for which a uniform quantity can be applied on the crops. Here, the seedlings are prepared in a soilless medium. A soilless medium is a substrata that is part of an artificial system of cultivation in which plants are grown without soil. This medium provides plants with physical support, regulates the water flow, serves as a reservoir of nutrients, and permits gas exchange to and from the roots. Here, the soilless medium is prepared at the center by using coco peat, which comes from the waste of coconut husk. It is mixed with vermiculate
a nutrient for seeds which contains magnesium and potassium for enriching the mix. Another component is perlite, a mineral which improves drainage and aeration. It is 100% organic, free from any contamination, and also very effective for greenhouse applications. The presence of organic compounds in cocoa peat can stimulate root growth and offer some natural resistance to plant disease. The seedlings are created with the help of an automatic sowing machine. In this, the mixture of cocoa peat, vermiculite and perlite is put into plastic cone trays. Then, the high-quality seeds are fed into the machine, which plants the seeds in cone trays filled with the soilless medium. The trays are then taken to the germination center for developing at a particular temperature till the seeds germinate. Once the seedlings grow to a specified size, they are supplied to the farmers. मैं गांव फुलक से बिलोंग करता हूँ। मैंने नेट हाउस लगाया हुआ है। मैं पहले बीज सीधा खेत में लगाता था। Earlier, I used to plant the seeds in the farms directly. So the plants used to die and the seeds used to get destroyed also because of the pathogens in the soil, due to which I had faced huge losses. Then I get to know about this center. And when I came here, I saw that they provide good quality of already grown seedlings. Then I planted those seedlings in my farm. And I have got 600 quintals of cucumber in 1 acre and sold the produce for approx 6.5 lakh rupees. So I would recommend all the farmers to come and get these seedlings from the center for better yields and higher profits. 600 क्विंटल करीब मेरा क्विंटल खीरा निकला है और उसमें क्या हुआ यानी 6.5 लाख के 7 लाख के करीब मेरा खीरा वो पैदावार हुई है। मैं सभी किसानों से ये कहना चाहूँगा जो भी पौधे आप तैयार करवाओगे तो आपका ना खर्चा भी बचेगा और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। In addition to high-tech poly houses, there are other specialized poly houses for various applications. Naturally ventilated polyhouse cultivation takes place in a special structure made of galvanized pipes, insect-proof nets, and transparent plastic sheets, which protect the crops from adverse climatic conditions, insects, and different viruses. In this type of polyhouse, all 4 sides of the greenhouse are covered with an insect-proof 40-micron mesh nylon net. The naturally ventilated polyhouse is designed to solve the problem of ventilation and humidity and especially suited for hot and humid weather conditions. These kinds of polyhouses are suitable for cultivating cucumber, tomatoes, and different varieties of capsicums. Then there is the walk-in tunnel cultivation method. It is a small hemispherical structure frame made of materials like wood or plastic or even iron.
Hello everyone, welcome to IIT Delhi. I am Ishwar Chand Misra, representing Bot Lab Dynamics. तो अभी आप जो देख सकते हो हमारे सामने 48 ड्रोन की कतारियाँ हैं जिसको हम लोग रो और कॉलम में लगाए हुए हैं। ये 48 ड्रोन्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं। इन 48 ड्रोन्स का जो काम होता है वो ये होता है कि हम डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट पैटर्न्स के प्रकृतियाँ हम लोग इस स्काई में बना सकते हैं रात में। जैसे अभी आप देखोगे हमारे सामने हम लोगों ने मल्टीपल पैटर्न्स स्काई में बनाए हुए हैं। तो अभी हम लोग का ये ड्रोन स्टार्ट हो चुका है और अब ये पैटर्न बनाने वाला है। तो फर्स्ट हम लोग 5 मीटर ड्रोन को ले जाके रोकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। ये हमारे बॉट लैब का स्टाइल रहा है कि हम लोग किसी ड्रोन को बनाने के पहले किसी पैटर्न को हम लोग एक साइन देते हैं कि ये स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे आप देख सकते हो इट्स जस्ट 3, 2, 1 एंड 0 एंड देन गो। ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है जिसको आप पिरामिड भी बोल सकते हो, पिरामिड ही है। और ये हम लोग 360 डिग्री पे रोटेट करने वाले हैं। तो ऐसे हम मल्टीपल पैटर्न स्काई में बना के रात के टाइम हम लोग क्रैकर को, जो हम लोग दीपावली के टाइम यूज़ करते हैं, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये पिरामिड फुल 360 डिग्री रोटेट करने के बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन बनाने जाएगा। अब ये पिरामिड 360 डिग्री पूरा कंप्लीट कर चुका है। अब ये अपने नेक्स्ट फॉर्मेशन पे स्विच करने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन आप गेस भी कर सकते हो क्या है, और या नहीं तो मैं बता दूंगा आपको अभी। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन एक पेटल है, फ्लावर पेटल, जिसको हम लोगों ने 4 फ्लावर पेटल से 4 डिफरेंट कलर दिए हुए हैं। ये सेम फ्लावर पेटल भी 360 डिग्री रोटेट करेगा। ये हम लोग रोटेशन इसलिए करते हैं और डिफरेंट एक्सिस इसलिए रखते हैं क्योंकि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और स्पेक्टेटर को किसी भी एंगल से दिखा सकें। तो अभी आप जो ये एंगल देख रहे हो, इस एंगल से हम किसी भी साइड के स्पेक्टेटर को दिखा सकते हैं, वो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और या फिर नॉर्थ ईस्ट, किसी भी एंगल पे। जब ये फ्लावर पेटल्स 360 डिग्री रोटेट कर लेंगे तो ये स्विच होंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन पे। और ये फ्लावर पेटल का 360 डिग्री रोटेट हो चुका है।
अब ये नेक्स्ट फॉर्मेशन पे स्विच करने वाला है। तो अभी हमारा ये नेक्स्ट फॉर्मेशन बन रहा है, आप इसको गैस भी कर सकते हो क्या बनने वाला है। इस टाइम हम लोगों ने बॉटलैप डायनेमिक्स ने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया है। हम लोग एक एनिमल कैरेक्टर को ड्रॉ करना चाहते थे, वो हम लोगों ने इस बार किया है। होपफुली हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन में ये जो डियर बना हुआ है ये रन करेगा, अपने फेस को हिलाएगा और ये डिफरेंट मोशन कर सकता है। और ये हम लोग का एक सेलिब्रेशन था आईआईटी दिल्ली के लिए, जो आईआईटी दिल्ली 60 साल पूरा कर चुका था। तो हम लोग चाहते थे कि आईआईटी दिल्ली का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। तो ये हमारा आईआईटी दिल्ली बन चुका है, जैसा आप देख सकते हो। और ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन बनने वाला है। हम लोग आईआईटी को 60 ईयर में लिखना चाहते थे, तो ये हमारा 60 है। उसके बाद हमारा ये प्यारा फ्लैग है, जिसको हम लोग 100 ड्रोन के साथ और अच्छे में लिखने वाले हैं। अभी ये हमारा 48 ड्रोन के साथ फ्लैग है, जो ये रोटेट कर रहा है। ऐसे हम डिफरेंट इमारतों और भारत की नए नए धरोहरों को ड्रोन लाइट शो के थ्रू दिखा सकते हैं। और हमारा ये फ्लैग लहरा रहा है। जब हम ड्रोन बढ़ाएंगे तो इसमें अशोक चक्र भी शामिल होंगे। पीछे और ये हमारे सारे फॉर्मेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये ड्रोन लैंड के ग्राउंड पे अब जाएंगे। जब हमारे सारे ड्रोन कंप्लीट हो जाते हैं, सारे फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो ड्रोन अपने इनिशियल पोजीशन पे जाके फिर लैंड करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए 8 मिनट के लिए। और हम ये होपफुल करते हैं कि हम बॉटलैप डायनेमिक्स फ्यूचर में नए नए ड्रोन लाइट शोज़ आपके लिए विथ नंबर ऑफ ड्रोन बढ़ा के 100-200 के साथ आएंगे। धन्यवाद।